what should be the right way or what should be the process to build or grow a startup? I always tell entrepreneurs the best way to start is to start. Lots of tips and tricks I can give there, but starting is critical. And so there is no shame or no issue in just starting and trying. Trial and error for me is something which is under indexed or not talked about now, but so important. अगर हमने ऑफलाइन में ट्राई करके फेल नहीं किया था तो ये कभी पता भी नहीं चलता कि ये मार्केट में दम है ऑनलाइन में. बिल्डिंग अ D2C ब्रांड ना, आप बहुत ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक होकर आपको काम करना पड़ता है, कस्टमर को समझ के काम करना पड़ता है. आप कैसे कस्टमर्स को समझते हैं? The best way to get customer feedback, and I learned this from Manish Taneja, the founder of Purple. Pick up the phone and talk to the customer. There is nothing better than doing that. All founders are struggling to build highly efficient teams, and team में ऐसा नहीं होता है कि मेरी टीम full हो गई है. There is always more you can add, always better you can get. Why do startups fail? You underestimate the amount of effort it takes to change the market. You overestimate the size of the market. You don't get the right team. You don't build out the right product. You can't scale the product after a certain time. More customers are not willing to buy your product. There's too much competition. Your competitor has raised more money than you. You don't have money. You run out of money. You burn too much money. So many reasons why startups fail. Welcome to Ashish Interaction podcast, man. Thank you, Ashish. Very excited to be here, and बहुत planning हुआ है इसमें, तो I'm excited to have the conversation finally. Yeah, that's really great. First of all, I would like to know the reason why you are, whenever I met you and whenever I spoke to you, आप हमेशा एक हाईली एनर्जी के साथ रहते हो. What's the reason of it? आशीष, I'll tell you something. मैं अभी इन्वेस्टर हूँ, right? And lots of entrepreneurs मुझे ये बोलते हैं कि आपका एनर्जी इतना हाई, आपका एनर्जी इतना हाई. I'll tell you, when you're talking to someone, what do you lose by giving a smile? Right. What do you lose by seeming interested in the conversation, right? And I think it changes the whole vibe. I've spoken to so many founders who have said, sir, आप पहले investor हो कि आप investor community में you're one of the few people who starts a call with a big smile. Ask how I am, right? And that instantly breaks the ice, gives the person the respect they need, and has a meaningful conversation then. Right. If I'm talking to you and I'm giving you 3, 5, 10, 100 minutes of my time, I should make you feel like I'm interested in the conversation, right? I'm not on my phone, I'm not opening 6 screens. देखो, अगर आप Zoom call पे भी होते हो और आप कुछ और कर रहे हो, अभी 2 साल कोविड के बाद सबको पता है कि आप दूसरी स्क्रीन पे कुछ पढ़ रहे हो, right? Right. So I think that like it's the basic respect that I've learned from the people that I've had the best conversation with. This is what I get, right? Like energy even goes through a phone line. If I'm talking to you on the phone and we spoke on the phone and I showed high energy and I felt high energy, you got engaged in the conversation more as well. Yeah, absolutely right. Like, what's the why of your life? Like, why you are doing everything? Like, I read on your LinkedIn bio, like where you wrote that if you are someone who has just started, I'm open for the conversation. You can DM me. Why you are doing this? देखो, I had a journey. मेरा journey था कि मैंने मेरी family legacy को आगे बढ़ाई. Right? I took my family's ancient Ayurveda legacy and I made a company out of it and I had a great experience and I sold the company and ये सब हुआ. When I started the company, Ashish, I was 25 years old. 25 साल का था मैं. वो समय जहाँ मुझे कोई स्टार्टअप की एक्सपीरियंस नहीं थी, मैंने कभी कंपनी नहीं चलाई थी, मैंने FMCG कभी की नहीं थी, वो समय आई हैड नॉट सो मेनी पीपल टू हेल्प मी, एडवाइज मी, गाइड मी. आई हैड फ्यू पीपल, बट जो रियल वर्ल्ड लर्निंग्स है, बिजनेस कैसे चलाना है, वेबसाइट कैसे बनाना है, शॉपिफाई का वेबसाइट कैसे करना है, फेसबुक पे एडवर्टाइज कैसे करना है, ब्रांडिंग में कितना पैसा खर्च करना चाहिए, these existential questions and nobody to answer for me. Right. Had I had someone to answer me, I would have saved 2 years of my life, right? Yeah. So now that I have built a business with God's grace, I've sold a business, I've got a large outcome, etc. all of that. It's my job, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं नए entrepreneurs को ये knowledge, ये feedback, ये advice, ये help दूँ. तो every Thursday from 1 to 7 p.m. for the last 1.5 years, my calendar is open for anybody to book a slot with me. 25 minute का slot. Every Thursday I speak to 12 new entrepreneurs. Nice. Every Thursday. I've spoken to more than 1,000 entrepreneurs through this process. So there are 12 calls every Thursday. There are 4 Thursdays in a month. So you do the math, 50 entrepreneurs a month. Yeah. That's just really nice. open-ended conversation, not investment के बारे में कुछ नहीं. Just है, बात करना है. Here's my calendar. Book a slot. Let's have a conversation. And like, how do you plan your life? Like, ऐसे आपने बताया कि आप you are already engaged with like so much of investing things and like startup and then calls. How do you plan your life? Like, yeah, I would say as a investor now, मेरी life में थोड़ा structure है. तो as a founder तो आप plan नहीं कर सकते हो ना, because आप सुबह उठ के 9 बजे से 10 बजे 3 चीज टूट गए, right? There are 3 fires you have to
take care of 3-5 to manage. So now I actually have much more structure in my life. So I'm very strict about my workouts. 9 to 10 a.m. every day is blocked for workout. 8 to 9 a.m. every day is blocked for reading. And फिर उसके आगे मेरा दिन जाता है. तो from 11 o'clock to 8 o'clock I have my calls, my meetings, my whatever pre-schedule on a calendar. But pre and post work, that important part of the day is still with me. My reading, my workout, spend time with the family. My time for sports on the weekends. Every Sunday I play football. That's very important for me. साल का मुझे ये साल 500 किलोमीटर भागना है. I run 5 kilometers 2 to 3 times a week. So all of these things actually I have now allowed structure in my life. And when I go through the founder journey again, ये मेरी learnings है. You have to take enough breaks. I didn't take enough breaks. You have to add some structure to your life. To go by calendar. In 2017, 2018 मैं Google Calendar use ही नहीं करता था. जो है वो है. Right. Figure out कर लेंगे. And what the difference you have faced? Like आपको क्या difference मिला? Like 2017 में when you are not using the Google Calendar, now you are more disciplined. How does it adding value to your startup? हाँ नहीं, because you are respectful of people's time. You are never late. You know what your calendar is going by. If you're going to be late, you know in advance you're going to be late. And so you know what your day is ahead. When I wake up in the morning and I'm doing my reading, I also check my calendar. क्या क्या है ये दिन में? Right? So I know how to prep myself mentally for the day, and that allows me to be more efficient, to be better during the day as well. You made like one of the like most successful D2C exit. You made the startup. Like I want to ask you, like ये मैं इस perspective से आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे अगर if somebody is hearing this podcast and he or she want to start a startup, okay, what should be the right way or what should be the process to build or grow a startup? पहले तो starting में ना बहुत questions हमारे मन में आ जाते हैं. ये होगा वो होगा, ऐसे सेल करेंगे, ऐसे सेल होगा कि नहीं होगा, टीम मिलेगी कि नहीं. I always tell entrepreneurs the best way to start is to start. Until an entrepreneur starts, I get hundreds of questions from founder. ये चैनल अच्छा है, वो चैनल अच्छा है, ये ट्राई करो, वो ट्राई करो. Think about cricket के analogy में देता हूँ आपको. बैट्समैन जब तक पहला बॉल खेलता नहीं है तब तक उनके मन में इतने चीज होते हैं, बट जब पहला बॉल बैट से मिस हुआ के लगा ना, तब सब कुछ चेंज हो जाता है. सो फॉर मी द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ बिजनेस इज टू स्टार्ट. Once you hear from customers, once you get customers, once you hear feedback, your friends and family will tell you one thing, they are your supporters, right? They'll support you in all time. But when you get harsh customer feedback or real customer feedback, that's when you know whether the business is working or not, right? So my opinion is the best way to start is to start. Grow, and the best way to grow, there are hundreds of ways to grow, and each business has its own way to grow, and lots of tips and tricks I can give there. But starting is critical. Yeah. And so there is no shame or no issue in just starting and trying, right? Yeah. Trial and error for me is something which is under indexed or not talked about now, but so important. हमारे journey में देखो, we started offline, we failed miserably. We realized कि offline में बहुत competition है, डाबर, पतंजलि, इमामी, वैद्यनाथ, जंडू सब लोग हैं. ये offline market में डॉक्टर वैद्यास कुछ नहीं कर सकता है, कि स्केल नहीं हो पाएगा बिकॉज इतना कंपटीशन है. ये कंपटीशन बहुत पुराना है, उनके बहुत कस्टमर्स है, रिटेलर्स के साथ अच्छा रिलेशन है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अच्छा रिलेशन है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप सालों से बना है. हमारे ये मार्केट में खेलना बहुत डिफिकल्ट होगा, पर ऑनलाइन में कोई खेल रहा ही नहीं है. अगर हमने ऑफलाइन में ट्राई करके फेल नहीं किया था तो ये कभी पता भी नहीं चलता कि ये मार्केट में दम है ऑनलाइन में. इंटरेस्टिंग. एंड लाइक बिल्डिंग अ D2C ब्रांड ना, आप बहुत ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक होकर आपको काम करना पड़ता है, कस्टमर को समझ के काम करना पड़ता है. हाउ डू यू लाइक आप कैसे कस्टमर्स को समझते हैं? हाउ डू अंडरस्टैंड द कस्टमर? सिंपल यार आशीष, ये सब कस्टमर फीडबैक, कस्टमर साइकोलॉजी, सब बड़े बड़े टर्म्स यूज कर सकते हैं, बट द बेस्ट वे टू गेट कस्टमर फीडबैक, एंड आई लर्न दिस फ्रॉम मनीष तनेजा, द फाउंडर ऑफ पर्पल. पिक अप द फोन एंड टॉक टू द कस्टमर. देयर इज नथिंग बेटर देन डूइंग दैट. जब हमने स्टार्ट किया था ना 2017 नवंबर में, व्हेन वी लॉन्च्ड आवर वेबसाइट, एक साल के लिए हर कस्टमर के साथ मैंने बात की. ओके. एक ऑर्डर आता था, दो ऑर्डर आते, 3-4 ऑर्डर आते. Finally 50 orders हो गए, and I could not do it any longer, right? Yeah. But that 1 year of talking to every single customer, understanding why they are buying our product, understanding that, by the way, Dr. is not a Bombay, Delhi, Bangalore brand. Our customers are from Muzaffarnagar, Imphal, Patna, Anantnag and Trichy. And 70% of our customers don't speak English at all. तो इंग्लिश में ऐड करने का कुछ भी फायदा नहीं है, हमें हिंदी इंग्लिश में ऐड करना होगा, रीजनल लैंग्वेज में ऐड करना होगा. तो ये लर्निंग्स हमें कस्टमर के बारे में कैसे मेरी कस्टमर के साथ बात करके. The best founders still talk to customers directly. Best founders. What do you think? Like building a B2C brand, not easy, but पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप B2C और B2B का एक डिफरेंस समझा दीजिए कि B2C ब्रांड, B2C बिजनेस क्या होता है और B2B क्या होता है.
तो B2C होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, डायरेक्टली जो हम एंड कंज्यूमर्स है हमें प्रोडक्ट बेचना, और B2B है बिजनेस टू बिजनेस. तो जो businesses है, so I'll give an example of a B2B business and a B2C business in relation to Dr. Vaidyas. B2B है जो रॉ मटेरियल सप्लायर है, जो हर्ब्स देता था हमें, केसर, तज, लवंग, इलायची, वो B2B बिजनेस था बिकॉज वो हमें रॉ हर्ब्स देता था और हम बिजनेस थे. हम वो रॉ हर्ब्स को प्रोसेस करके दवाई बना के एंड कस्टमर को देते थे. तो डॉक्टर वैद्यस वाज अ B2C बिजनेस, बट आवर हर्ब सप्लायर, जैसे मध्य प्रदेश से हमारे हर्ब सप्लायर्स आते थे, वो B2B बिजनेस थे. तो वो हमें हर्ब्स देते थे, वो हर्ब से हम प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स बनाते, तो हमारा B2C हो गया, उनका B2B हो गया. Right. That's the difference largely. But don't think that B2B business don't have customers. Because the customer for the herb supplier was me. And I was a manufacturer who made something out of those herbs. Yeah. So the way to work, the way to interact, the way to engage is different. But everybody has their own set of customers. Right. And पॉलिटिशियन का कस्टमर कौन है? जनता ही है. थिंक अबाउट इट, राइट? एब्सोल्युटली राइट. अर्जुन, एक स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर ना एक वर्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है आजकल, दैट इज हसल कल्चर. हसल कल्चर मतलब स्टार्टअप फाउंडर्स आर वर्किंग फॉर 16 hours 18 hours डे. इट्स अ न्यू नॉर्मल फॉर देम. डू यू थिंक लाइक कि डू यू बिलीव इन दिस कि स्टार्टअप फाउंडर्स को मैक्सिमम काम खुद से करना चाहिए एंड 16 hours and 18 hours इज the right way to manage the business and work life? देखो, my view is that you cannot work for 16 hours 18 hours a day consistently. 12-13 घंटे तक तो काम कर सकते हैं, मैंने किया है, बट फिर आपका फटीग भी हो जाता है, राइट? तो यू कैन वर्क फॉर 8-10-12 hours on a consistent basis with efficiency, but the 13-14 का एनीवेज एफिशिएंसी है ही नहीं आपके काम में, राइट? जो काम 20 मिनट का था आपको 1 घंटा लगा बिकॉज आप इतने थके हुए हो, राइट? सो आई वुड से प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टाइम and using your time efficiently is the skill for any entrepreneur, any investor, any person. I'm not great at it. You need to get better at it for sure. But if you can prioritize your time well, the smartest people in the world prioritize their time well. They can say no. Yeah. You have to learn to say no. I don't know how to say no yet. I'm not good at it. I'm learning. But only if you say no and you prioritize, are you going to be efficient and do things well. So it is, look, I am a big proponent of hard work. It's the first of our 7 philosophies at Dr. Vaidya. Hard work is our strength. And I would consider myself a hard worker over a smart worker. But there is a limit after which your body gets tired. Your body needs rejuvenation. Your body needs breaks. And we have to accept that. Because the breaks and the rejuvenation helps you be efficient the next day. Yeah. Me going for a trek, me going for a run, me going for a jog, me going for a cricket match, me watching football, me watching a documentary, me spending time with the family. That is all helping my mind rejuvenate to be more efficient the next day. And it's critical and it's important. And that's the thing like a lot of startups founders do wrong. और इसके ऊपर कई सारी बार बातें होती रहती कि हसल कल्चर इज समथिंग दैट इज लाइक जो आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. हाउ डू यू सी लाइक व्हाट शुड बी द राइट, जब आप किसी ब्रांड को बनाते हैं, लाइक व्हेन यू मेक अ ब्रांड, तो आपकी टीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उसके हाथ में. सो व्हाट शुड बी द राइट वे टू हायर द टीम? So this, I would say, Ashish, is the toughest question. And I don't have one clear answer. Because all founders are struggling to build highly efficient teams. And team में ऐसा नहीं होता है कि मेरी team full हो गई है. There's always more you can add, always better you can get, right? So my idea with the team, firstly my philosophy with hiring a team, मेरा philosophy ये है कि जो culture fits है, जो आपकी team के vibe, ethos, culture में fit होते हैं, that is better to hire than a skill set fit who doesn't fit your culture. I noticed in my experience building Dr. Vaidya, only the people who didn't have the skill sets but fit the culture learned the skills. The people who didn't fit the culture at all and had all the skill set eventually were bad apples, rotten apples in the organization. तो ये पहला है. दूसरा है कि honestly there is no one answer, one success, one mantra, one ये करो तो team बन जाएगी. For your team, you have to be looking absolutely everywhere. हम हायरिंग पोस्ट व्हाट्सएप स्टोरी पे डालते, इंस्टा स्टोरी पे डालते, फेसबुक पे डालते, हमारे डैड के ऑफिस में डाल देते हमारे हायरिंग के पोस्टर्स, लिंक्डइन, पर्सनल रेफरेंसेस, रिक्रूटर्स, नौकरी, इंडीड, सब जगह हम जाते थे टू फाइंड द राइट टीम मेंबर्स. एंड दैट्स ओके. देयर इज नो आंसर कि कुकी कटर वन साइज फिट्स ऑल, नहीं. बट you have to spend lots of time doing this. Lots of. After hiring the team, it's really important कि आप उस टीम को मैनेज कैसे करते हैं, right? What's your experience with managing the workforce and employees? My one big learning from doing this is two-way communication. As a manager,
It's not only downward communication. It's not only you talking to your team. Your team should be able to talk to you, give you feedback, tell you where you're right, tell you where you're wrong. That's the only way an efficient organization can grow. Because if let's say I was the CEO and founder of the company, and the guy working in my warehouse didn't have a direct line to me or wasn't able to interact with me or tell me his problems, I would never know what's going wrong in the warehouse. And so I'm a big proponent of two-way communication, not just one-way communication. Right. And this कैसा will लगा? help. बहुत सही. Makes sense, right? That's really nice. Yeah. And what do you think? Why do startup fails? Like अभी Indian startup ecosystem के अंदर, I would ask you the question related to Indian startup ecosystem. But उसके पहले there are a lot of startups जो fail होते हैं. Like recently when we read these studies and articles, there is in the newspaper majorly ऐसा बोला जाता है कि यार out of 100% 90% startup fails. Like why they are failing at this big scale? यार देखो देश बड़ा है, businesses बहुत है, सब जगह में इंडिया में there are more businesses than required, right? So some will succeed and some will fail. Startups by definition are people trying to solve 10-year problems in 3 years. Disrupt करना है उनको. तो they will obviously all not be successful, right? Because they are solving something new, finding a new solution to something. Sometimes it works, sometimes it doesn't work, and that's okay. Why do startups fail? You underestimate the amount of effort it takes to change the market. You overestimate the size of the market. You don't get the right team. You don't build out the right product. You can't scale the product after a certain time. More customers are not willing to buy your product. There's too much competition. Your competitor has raised more money than you. You don't have money. You run out of money. You burn too much money. So many reasons why startups fail, right? And to be honest, if you think about it, principally, अगर आप सोचो, 10 साल का प्रॉब्लम मुझे 2 साल या 3 साल में सॉल्व करना है. जो लोगों ने पहले 10 साल में सॉल्व किया, मुझे 3 साल में करना है. कोई जगह में हो सकता है, कोई जगह में नहीं हो सकता है, ठीक है, राइट? एंड इट्स ओके टू फेल. कल की शार्क टैंक एपिसोड में हमने गणेश बालकृष्णन को देखा, फ्लैटहेड्स का फाउंडर. ही बिल्ट अ ग्रेट ब्रांड, द बिजनेस डिडंट वर्क आउट, एंड ही ऑन नेशनल टेलीविजन सेड इट्स ओके, यू डोंट बिलीव दैट इट्स द राइट बिजनेस, एंड नाउ दैट यू टोल्ड मी द मेट्रिक्स डोंट मेक सेंस एंड यू आर राइट, तो ठीक है, नहीं चला, ओके, आई विल मूव ऑन, आई विल गो एंड वर्क इन अ D2C ब्रांड, आई लर्न, एंड 2-3 साल बाद मैं वापस आता हूँ सर शार्क टैंक पे, ठीक है ना? इट्स ओके. एंड हाउ डू वी रीइन्वेंट? लाइक अगर आपका स्टार्टअप नहीं चल रहा है ना, एंड यू आर ऑलमोस्ट क्लोजर टू द फेलियर कि यार अब यहाँ से आप नहीं कर पा रहे सर्वाइव एंड यू हैज टू रैप अप, सो हाउ डू वी रीइन्वेंट दैट आइडिया? मैं सुनील छेत्री का एक एपिसोड देख रहा था. सुनील छेत्री और कुणाल शाह का एक पॉडकास्ट का कॉन्वर्सेशन था, ठीक है. वहाँ सुनील छेत्री ये बता रहा था हमें कि ही जॉइंड दिस टीम कॉल्ड बैंगलोर FC. पहले 6 साल हर साल बैंगलोर FC कुछ ना कुछ जीता. And he would keep telling his team, guys, I'm so scared because there is no way to, there is no space to go further up. We're only going down from here. And now when his team is doing badly, he's telling his team, boss, this is the most exciting time because the only way for us is up from here. Right? And so, if you think about it from that time, difficult hai, failure hai, you're almost at the edge, right? But वहाँ से तो ऊपर ही दिख रहा है. If you're at the bottom of the table or you're last in a race, वहां से ऊपर ही जा सकते हो ना, और पीछे नहीं जा सकते हो ना. उससे नीचे कितना जाओगे? हाउ यू एडिट? आपने स्पोर्ट्स के बारे में बताया, यू प्ले फुटबॉल एवरी संडे. सो जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, यू हैव अ लाइक वॉरियर मेंटालिटी. आप सक्सेस फेलियर से थोड़ा सा डील करना जल्दी सीख जाते हो, क्योंकि आप रोज कभी हारते हो, कभी जीतते हो, कभी हारते हो, कभी जीतते हो. बट वो लाइफ में होता है ना, सेम. हर दिन हम 3-4 बार जीतते हैं और 3-4 बार हारते हैं. कोई दिन हम 10 बार हारते और जीतते भी नहीं है. कोई दिन 2-3 जीत होते और हार नहीं होते. दैट्स लाइफ. लाइफ में सोचो, स्पोर्ट्स में एक इंटरेस्टिंग चीज है, आपकी सक्सेस और फेलियर पब्लिक होती है. राइट. लाइक अगर आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलते हो तो सबको पता है कि आप डक पे आउट हुए, टीवी पे है, इंटरनेट पे है, सब एप्स पे भी लिखा है कि आप डक पे आउट हुए. तो sports is interesting because I have a lot of respect for sportsmen, professional sports people, because their success or failure is the most public thing in the world. Right? Entrepreneurs में ऐसा नहीं होता है. Right. If you think about it, professional sports and restaurants are the only two business where success and failure is public. Restaurants में क्यों? क्योंकि restaurant खाली पड़ा है फ्राइडे नाइट को, तो सबको पता है कि restaurant चल रहा नहीं है ना, basically. बट हमारा बिजनेस अगर अच्छा नहीं चल रहा है या अच्छा चल रहा भी है, तो ऑफिस में कोई अलग वाइब तो नहीं होगा. काम ही चलता रहेगा, कॉल्स पे रहते कॉल्स चलते रहेंगे. राइट. इट्स नॉट लाइक इफ यू आर डूइंग वेरी वेल, ऑफिस में ऐसे trucks of money are coming in or something like that. You can't see it, right? Especially in the digital age today.
So I think there's lots of learnings for entrepreneurs from sports. And मैं लिखता रहता हूँ LinkedIn पे, what are the learnings that we can get as entrepreneurs from sports, from mentality, teamwork, effort, discipline, structure, strength. All of these things are big learnings for us. I've learned so much from cricketers and footballers and their experiences and journeys into reinventing yourself. Dinesh Karthik, perfect example, reinventing himself. At 39, he has become a T20 player. Commentator था, अभी player बन गया है. सोचो. So much to learn from sports for us. So much. Right. What drives you for keep going? यार इसमें मेरे को issue नहीं है. There is so much potential, so much to do, so much left to do that I'm always driven. कुछ ना कुछ तो बाकी है ना करने. Right. And I'm never content. That's not a good thing. But I'm never happy with where I am. Right? तो 10 orders तक पहुंचे तो 20 orders चाहिए, 20 orders तक पहुंचे 50 orders चाहिए, 50 orders तक पहुंचे तो 100 orders चाहिए. So I'm always looking for more. We're in a country where there is no better time to start up than now. We have the most potential. We are in a place where maybe there's a global recession going on all over the world, but India is resilient. We're fighting over domestic consumption economy. Things are special for India the next decade. And we're fortunate कि ये decade में हम जी रहे हैं और हम कर रहे हैं काम. तो पूरा utilize करना चाहिए. Right. And especially I heard it in a podcast जहाँ पे the other person was saying कि India is the country जहाँ पे maximum customers है. Like अगर आप कहीं पे भी कोई भी youngest population in the world is in India. Yeah. Youngest population in the world. 2012 में 13 में I came back to India. 12-13 में लोग कह रहे थे कि डिजिटल ई-कॉमर्स ये सब बिजनेस नहीं चलने वाला इंडिया में. देखो 10 साल में क्या हुआ है. देखो 10 साल में क्या हुआ है. My mother who didn't set up an online bank account till 2020 is now asking a vendor why he's not accepting UPI. My dad who had never placed an order on Amazon has placed 50 plus orders on Amazon. Now he's going on a D2C website, placing an order from his Instagram feed, ad देख के वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस करके 2 दिन बाद जब ऑर्डर नहीं आए वो कंपनी को कॉल करे और बोल रहे कि आप बॉम्बे में हो मैं बॉम्बे में हूँ 2 दिन नहीं लगता है ऑर्डर पहुंचाने में, क्या कर रहे हो आप. That's how rapidly behavior is changing. And it's amazing. It's amazing to see. How do you see Indian ecosystem, Indian startup ecosystem? Like basically जहाँ पे कई सारे startups हो रहे हैं, नए ideas भी आ रहे हैं. But one thing I noticed before adding your point about Indian startup ecosystem कि कई सारे startup के ideas जो various countries में, like even you have been in US, so US UK के ऐसे कई सारे बड़े ideas हैं जो वहाँ के startup बहुत अच्छे चले हुए हैं. उनके startup ideas को कई बार alter करके इंडिया में भी use किया हुआ है. I won't I know what you're saying. यार I think personally India में COD is existent. US Europe में COD is not existent, right? India में we have something called pre-booking cabs. अगर आपका फ्लाइट है सुबह तो आपको 7 बजे घर से निकलना है तो आप रात को ही 7 बजे का कैब बुक कर लेंगे, right? These are nuances of the Indian market. These are just 2 or 3 things I've talked about. इंडिया के लिए बनाना है तो आप इंस्पिरेशन बाहर से ले सकते हो, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट इंडियन मार्केट के लिए आपको आइडिया बनाना होगा. द इंडियन वे इज अ वेरी डिफरेंट वे. इंडिया इज अ वेरी यूनिक कंट्री. इंडिया में 20-30 देश एक देश में है, राइट? इतने लोग हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, इतना डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है. इंडियंस आर डिफरेंट फ्रॉम एनी प्लेस एल्स इन द वर्ल्ड. एंड सो बाहर से आइडिया लेके एग्जैक्ट कॉपी इंडिया में नहीं बना सकते हैं हम. हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आइडिया सोचने होंगे. सो आई थिंक that's my view on copycat ideas from outside of India. Yes, you can take inspiration for sure, but exact copies may not work in India. But ecosystem के बारे में बात करेंगे because that's a great way to sort of wrap up the conversation. I would say there is no better time to start up than now. When I started up in 2016, world was very different. अभी के young entrepreneurs में देख रहा हूँ, they're 10x better than me. 23-25-year-olds are so much better than I was at 23-25. Digital ecosystem is here. UPI is here. E-commerce is here. Aadhaar has been created. My grandmother is watching Shark Tank. ये समय हमने कभी जिंदगी में देखी नहीं है. Right. And as young people, we are fortunate to be able to create new things, to be able to have the energy, enthusiasm. एक चीज मैं बताता हूँ. One parting thought I'll give all of you. आपने मुझे पूछा कि आप इंदौर आए थे, हम बराबर से मिल नहीं पाए, right? Because I came to Indore on my mother-in-law's birthday, so I had to fly back half day. Why did I come to Indore? Because Indore, Chandigarh, Guwahati, Raipur, Shillong, इन शहरों में इकोसिस्टम अभी बन रही है.
अगर Right. इंडिया को बड़ा बनाना है तो बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर जैसे 50 और शहर चाहिए हमें. एंड सो Right. आवर जॉब एज यंग पीपल इज टू हेल्प द इकोसिस्टम थ्राइव. आप मुझे पूछते हो आप इतना टाइम कैसे मिलता है एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात करने, बिकॉज अगर हमने नहीं किया ना ये समय में तो हम पीछे पड़ जाएंगे. एंड सो माई गोल एंड ऑब्जेक्टिव, जब भी मुझे आउटसाइड ऑफ टॉप 10 सिटी से कुछ इन्वाइट मिलता है टू कम एंड स्पीक एट आई गो. बड़ा हो या छोटा, आई गो. व्हाट इज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग आपको सबसे स्टार्टअप, स्पेशली स्टार्टअप कल्चर की सबसे फैसिनेटिंग थिंग्स क्या लगती है? यार जब आप एयरपोर्ट पे हो ना या आप ट्रेन स्टेशन पे हो, बैकपैक वाला बंदा स्टार्टअप वाला बंदा है, राइट? एंड दैट कॉन्वर्सेशन, वेदर यू आर यूनिकॉर्न और अ 21-year-old स्टार्टिंग, दैट फीलिंग ऑफ बिल्डिंग अ स्टार्टअप, स्ट्रगलिंग, ये बैकपैक में आपका फोन है, आपका लैपटॉप है, आपका बैटरी पैक है, आपका चार्जर है, आपका नोटबुक है, आपका बुक है, सब कुछ है. सबके बैकपैक में वही होते हैं. तो दैट कल्चर दैट यूनिफाइज ऑल ऑफ अस एज पीपल who come from different parts of India, different ages, come from different backgrounds, educational backgrounds, financial backgrounds, but startup की vibe हमें unite करती है. That's very special. It's new and it's really cool. That's really nice. I heard you somewhere on the podcast where you spoke about like I don't plan my life for 5 years. I plan it for 100 years. 100 days. 100 days. I'm sorry. So like what's this concept? यार quantifiable goals रखने हैं मुझे. 5 साल का गोल मैं कैसे क्वान्टिफाइबल रखूं? 5 साल पहले मुझे ये नहीं पता था कि मैं कंपनी बेच दूंगा, कि मैं नया घर में मूव कर लूंगा, कि माई वाइफ विल बी हैविंग अ बेबी और आई विल बी हैविंग अ बेबी. आई डिडंट थिंक ऑफ एनी ऑफ दीस थिंग्स. सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्लानिंग फॉर 5 years? 100 दिन का क्वान्टिफाइबल गोल्स रख के उनको रीअसेस करके नेक्स्ट 100 days के गोल्स बनाने. दैट्स हाउ आई लिव माय लाइफ. And why you decided to be only 100 days? It can be 30 days. It can be 30 days, but 30 days में कुछ strategic हो नहीं सकता है ना. 30 days में, so there's a concept of working on the business and in the business, right? On the business is long term strategic big projects. In the business day to day. 30 दिन में day to day हो सकता है. 100 दिन में strategic objectives, initiatives, change, बदलाव ला सकते हो आप 100 दिन में. Right. Let's Habits are created and changed in 100 days. I gave up sugar. पहले मैं 30 दिन के लिए sugar give up करने चाहता था. Someone told me 30 दिन से कुछ नहीं होगा. आपको 100 दिन के लिए गिव अप करना होगा. वो 100 दिन 3 साल पहले हुए थे. 3 साल पहले यार 100 दिन का मैंने शुगर किया. हर एक की ना अपनी बचपन की अपनी कहानियाँ होती है, अपनी स्टोरी होती है, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं. आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे चाइल्डहुड से, एंड हाँ लाइक पूरा ग्रोइंग अप होने का फेज कैसे रहा, लाइक हाउ यू लाइक till the Dr. Vaidya's equation? हाँ यार, like I think I had a amazing childhood, but I suffered from asthma growing up and that was always the back of my mind. तो मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता था, मैं फुटबॉल नहीं खेल पाता था, बिकॉज यहाँ की बॉम्बे के क्रिकेट फील्ड में बहुत डस्ट है, धूल है, तो इट वाज नॉट गुड फॉर माई asthma. तो आई वाज प्लेइंग golf and squash while all my friends were playing cricket and football. मैं लिम्का, फैंटा, स्प्राइट आइसक्रीम नहीं खा पाता था जो मेरे दोस्त खा पाते पी पाते थे. तो once I got cured of asthma, my life changed. I started playing cricket again. I went to college in the US. ये सब देखा मैंने. I think US जाके ना मुझे बहुत exposure मिली. One, to see what was happening there, but two, to meet people from all over the world. I got married in 2018. 75 people came from outside of India, from across the world for my wedding. All my friends from abroad. वहाँ से मैंने ये learning थी कि I got to see things outside of just my perspective and my Bombay perspective, my Indian perspective. That's really important. It opened up my mind. Right. And how was your experience with US? Like, what's the key differences between the US customers and Indian customers? बहुत different है यार. वो market बहुत अलग है. Not good, not bad, just very different. The purchasing power is different. The average order values are different. What the customer cares about is different. So I would say, abhi I run a fund and we have colleagues in the US and Europe who invest. And I think there's lots of difference between the markets, nuances of the markets, and that's okay. There are learnings, there are trends, but India's India. India's India, yeah. Right. Now do you like आप फंडिंग भी करते हैं, you are an investor too. So आप फंडिंग के लिए आप क्या basic principles देखते हैं? Let's say if somebody who need funding and who want to approach you, like what are the things you would look into his idea or process? So I look at three things. I fund early stage businesses, right? I invest early. So one, founder. Who is the person? Why do they have a right to win? And why will they fight through tough times? कितने failure से उठ पाएंगे, right? Number two, market size. Is the market big enough that the company can keep growing very fast to build a large business? And three, जो standard होता है business, economics, team, तो
revenue, growth velocity, gross margin, EBITDA, Right. customer acquisition cost, lifetime value, team क्या है, ये सब. So 50% founder, 20% market, 30% on business economics and team. That's how I look at early stage businesses. And why you decided to be the only early stages businesses? बस वो मुझे समझ आती है. मैंने एक early stage business बना दी तो वो मुझे समझ आती है. Right. You have to do what you're good at or what you perceive to be good at, right? Right. One more thing, like we discussed about Shark Tank. Shark Tank के आने के बाद में एक अलग हाइप आ चुका है. लाइक जो यंग जनरेशन है जिनको नहीं पता था बिजनेसेस क्या होते हैं, फंडिंग्स क्या होती है, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए उनको नहीं पता था, तो एक अवेयरनेस क्रिएट हुआ है. हाउ डू यू सी लाइक द इम्पैक्ट ऑफ शार्क टैंक इन इंडिया? It's crazy. My grandmother watches Shark Tank. It has made entrepreneurship startup mainstream. और ये बहुत अच्छा है, right? Yeah. Because kids will now watch it, their parents will watch it, they will realize startups are a viable career option. It's made terms like customer acquisition cost, runway, lifetime value, primary, secondary, funding round, commonplace. Yes. Everybody knows it now, and that's amazing, right? Right. That's a really good thing to know. Right. All right. Before concluding the podcast, I would like to have a piece of advice from you. Like कि ऐसी कौन सी advices हैं आपकी that जो भी startup founder, जो भी person अभी startup के अंदर आने वाला है, so he should keep in his mind or her mind. मैं 3 advice देता हूँ. Number 1, startups बाहर से, Shark Tank TV से, newspaper article से, unicorn से आपको बहुत glamorous लगता है. Reality में startups में बहुत failure होती है. And so the hallmark of a good entrepreneur is fighting through tough times with grit and resilience. That's one, right? My favorite song is this. When I was growing up, एक cricket series थी शारजा में 98-99 में, 97-98 में Desert Storm की series से याद आती है हमें when Sachin scored some crazy knocks against Australia and all. That's when Sachin really came to the fore. Yes. तो दैट सीरीज का थीम सॉन्ग था एक टब थम्पिंग बाय चांबा वाम्बा एंड द कोरस ऑफ दैट सॉन्ग गोज आई गेट नॉक डाउन बट आई गेट अप अगेन यू आर नेवर गोना कीप मी डाउन. दैट शुड बी द मंत्र ऑफ एवरी एंटरप्रेन्योर, राइट? सो दैट्स वन. सेकंड, यू कांट डू इट अलोन. 14, 16, 18 घंटे आप कंसिस्टेंटली नहीं काम कर सकते, जैसे मैंने पहले बोला था. तो यू हैव टू बिल्ड एन एम्पावर्ड टीम फ्रॉम डे वन. और तीसरा, स्पेसिफिकली फॉर यंग पीपल, स्टार्टअप्स पार्ट टाइम नहीं होते. आप जॉब के साथ साइड में स्टार्टअप नहीं कर सकते. वो साइड हासिल होता है बिकॉज हॉबी है, साइड बिजनेस है. मेरा पॉडकास्ट इज माई हॉबी, माई रनिंग इज माई हॉबी, माई वॉचिंग स्पोर्ट्स, प्लेइंग स्पोर्ट्स इज माई हॉबी, राइट? बट अगर स्टार्टअप करना है, अगर कुछ फुल टाइम करना है, तो आपको सब कुछ और छोड़ना होगा इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग ऑफ स्केल. यू कांट बी स्लाइटली प्रेग्नेंट विद एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? दिस इज माई वन ऑफ माई फेवरेट लाइन्स. ये मेरे 3 एडवाइस है. एंड लास्ट थिंग आई वुड से इज stay hungry, stay foolish, and keep building. Right. That's really nice, and that's really a wonderful talking to you. Thank you so much for being on the show. Thank you, Ashish. Thank you. Been a pleasure.